Hello students, today in this video lecture we will learn about the basic information of optical fiber communication. The points uh, we will see in this video lectures are about the optical fiber communication, working principle of optical fiber communication, part of optical fibers, types of optical fibers, block diagram of optical fiber communication, its advantage, disadvantage, and applications of optical fiber communication. This lecture will cover these all information, basic information of optical fiber communication. First, we start from about the optical fiber. What is the optical fiber? Optical fiber basically a dielectric waveguide in which light propagate, signal propagate in the light form through total internal reflection principle. The electromagnetic energy travel through in the form of light. The light propagation along a waveguide can be described in terms of a set of guide electromagnetic waves called as modes of the waveguides. You can see in the figure there are various optical fibers in which a electromagnetic wave or our signal propagate in light form. Okay, now the working principle of optical fiber. बेसिकली प्रिंसिपल को समझने से पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. The basic parameter or fundamental optical parameter of a fiber is refractive index. Refractive index ऑप्टिकल फाइबर का मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको समझना जरूरी है. तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम यानी C टू दैट in a matter is the index of refraction, and it is shown by n, by notation of n. So refractive index is the basic or fundamental optical parameter. Okay, and it is defined, you can see in this figure, the refractive index of any material is a ratio of velocity of the light in vacuum to the speed of light in particular that material. Okay, we are see the speed of light in free space, and its value, you know, its value is 3 to 10 की power 8 meter per second, and v the speed of light in dielectric or non-conducting material, because waveguide is made by a dielectric material or a non-conducting material. Okay, now generally for a traveling light ray, reflection take place when n2 is less than n1. We will discuss this later. N2 is less than n1. So the bent of light ray at the interface is the result of difference in the speed of light in two material. देखिए, जब कोई भी वेव एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाती है तो उसका जो वेलोसिटी है लाइट का वो चेंज हो जाता है. ठीक है, और जो उसका पाथ है वो भी डाइवर्ट हो जाता है. आपने 10th-12th में भी आपने स्टडी किया होगा लाइट वाले चैप्टर में. तो इसको समझने के लिए हम स्नेल लॉ को समझने की कोशिश करते हैं. there are two medium of different refractive index, and the refractive index of these two different medium are n1 and n2 correspondingly. Now you can see in this figure, see here,
there are two medium we are considering of refractive index n1 and n2. And suppose we consider this condition where n2 is less than n1. Okay, and that means n2 is less dense where n1 is higher dense. And we can say the refractive index of material above medium is less than lower medium. Okay, so there are two medium, medium 1 or medium 2. So the refractive index of medium 1 is n1 and refractive index of medium 2 is n2, and we are considering this situation when n2 is less than n1. So the light comes from medium 1 and enter into the medium 2. जब light 1 medium से medium 1 से medium 2 में enter करेगी, तो in this situation the path actually of light is this, but it deflect और ये अपना जो original path है उस पाथ को चेंज कर देती है. लाइट का जो पाथ है एक्चुअली जब वो सेकंड मीडियम में एंटर करती है लाइट, तो उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है. अगर n2 इज ग्रेटर देन n1 होगा तो दिस ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके पास चली जाती है. और अगर n2 इज लेस देन n1 होता है तो ये उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है, उससे दूर चली जाती है. ठीक है, तो दिस इज द एंगल phi1, this is the angle phi2. Phi1 is called incident angle and phi2 is refracted angle. So according to the Snell law, you can see Snell law says n1 sin phi1 is equal to n2 sin phi2, where phi1 is angle of incidence and phi2 is the refracted angle. And n1 and n2 are the refractive indices of two material. Okay, now if we increase phi1, if we increase then phi1, phi2 is also increase. Okay, when phi2 become 90 degree, that means if phi2 अगर आपका 90 डिग्री हो जाता है, then this phi1 or this incidence angle, that incidence angle for this phi2 become 90 degree, then this phi1 incidence angle is called critical angle. Okay, if the angle incidences phi1 is much larger than the refractive angle phi2 at a point become 90 or pi by 2. Further refraction is not possible beyond this point. Hence, such a point is called as critical angle and it is denoted as phi c. Okay, when the incidence angle phi1 is greater than critical angle, अगर हम critical angle से भी increase कर देंगे phi1 को, तो जो वेव दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही थी वो क्या होगा, उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी. यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा. ओके, जिस मीडियम से वेव गई है उसी मीडियम में वो वेव रिटर्न होके आ जाएगी. कब होगी, जब phi1 को हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दें. क्लियर? ओके, सी दिस फिगर, आपको इससे इजिली समझ में आएगा. देखिए यहाँ पर, दिस इज द phi1, दिस इज द phi2. Okay, in this first figure phi1 is less than critical angle, then this wave refracted in second medium. Let this is the water or this is the air, n1 and n2. Let n1 is the refractive index of water and n2 is the refractive index of air. So when wave propagate from water to air, or phi1 is less than phi c, then this light wave propagate in the air with angle phi2. Now when phi1 is increased equal to critical angle,
then the refractive index or phi 2 become 90 degree. In this situation, phi 1 is called critical angle. Now, if we increase phi 1 to critical angle, or we can say phi 1 is greater than phi c, then uh, the wave return to in first medium or in water again. ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा. दिस इज द प्रिंसिपल. So basically, this is the principle of a waveguide. In waveguide, we have two medium called core and cladding. Okay. Now part of the light. So there are three part of the waveguide. One is the core. This is the intermost material core. Second one is the cladding, and outer side, this is the coating or shielding. So there are three parts: core, cladding, and coating, buffer coating, or it is also called shielding, to provide the strength of the waveguide. Okay. So let the refractive index of core is N1, refractive index of cladding is N2. Now हम जो है N2 को हमेशा N1 से बिलो रखते हैं. इसी कंडीशन में आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा जब कोर से लाइट, हम क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंस करते हैं कोर में. दिस इज द लाइट. और लाइट जब ऊपर क्लैडिंग में जाती है, और अगर हम इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखते हैं, तो लाइट जो है वापस कोर में रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है, और इस तरीके से आपका कोर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना डेवलप हो जाता है, और लाइट आपकी प्रोपेगेट करती है. तो आपको बेसिक प्रिंसिपल इसका समझ में आ गया होगा. ओके. इसमें है क्लैडिंग का क्या रोल है. बेसिकली जो लाइट प्रोपेगेट होती है वो कोर में होती है, एंड द रोल ऑफ क्लैडिंग रिड्यूस द स्कैटरिंग लॉस. बिकॉज अगर क्लैडिंग को अगर हम नहीं रखेंगे, दूसरा मीडियम अगर आप चूज नहीं करेंगे, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है. और ये कोर को प्रोटेक्ट भी करती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देती है. ओके. नाउ द टाइप ऑफ फाइबर्स. फाइबर्स केबल्स जो होती हैं वो बेसिकली दो तरीके की यूज होती हैं. एक स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है और दूसरा होता है ग्रेड इंडेक्स फाइबर. स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या होता है, जो लाइट होती है वो स्टेप्स में चेंज होती है, लाइक दिस स्टेप्स. और ग्रेडेड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में क्या होता है, इस तरीके की वो जो है वो इस तरीके से होती है, वो स्टेप्स में चेंज नहीं होती, ग्रेजुअली रिफ्लेक्ट, मतलब रिफ्लेक्शन होता है, ग्रेजुअली रिफ्लेक्शन. और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या होता है, एक ही मटेरियल होता है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मिडिल में सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम आउटर साइड में जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता चला जाता है. जबकि स्टेप इंडेक्स फाइबर में हम दो मटेरियल अलग अलग चूज करते हैं, जिसका एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होता है और दूसरे का N2 होता है, और वो फिक्स रहते हैं. ठीक है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ optical fibers we use. Now again, these two fiber cables divided into two parts: single mode fiber and multi mode fiber. In single mode fiber, only one mode of light propagate, while in multi mode fibers there are various modes, or there are multiple modes can propagate in the optical fiber. Okay. Now the basic important, what are the block diagram of optical fiber communication? You can see in this figure. In this figure, this is the transmitter and this is the receiver, and this part is called regenerator or repeaters. Okay. So first, this is the electrical input signal, because if we talk about the communication, or we are the student of electronics and communication, so जो इनपुट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होना चाहिए. अगर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं है, तो बाय यूजिंग ट्रांसड्यूसर यू कैन चेंज एनी टाइप ऑफ सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ओके. सो दिस इज द इनपुट ऑफ इनपुट सिग्नल.
Now, for propagation of signal in the optical fiber, we require a source which convert electrical signal into the light. So this is the light source, and light source को operate करने के लिए we require a driver circuit. So this is the transmitter section where we require a driver circuit and a light source. Light source may be it can be laser or it can be LED. ठीक है, this is the optical splice. Splice basically these are the joints where we connect two fiber cables. These are the optical couplers. We can use various optical couplers for coupling the signal to the another side or another optical fiber. This is the regenerator. If we want to a long distance communication, we require the generator. Regenerator is basically a combination of receiver and transmitter. We first receive the signal, then we regenerate the signal, remove the noise, increase the power of signal, and again we transmit it through a transmitter. Okay. Now in the receiver side, we use a optical amplifier which improve the strength of the signal, and this is the photodetector. Basically this is the receiver. Photodetector is a device which convert the light which convert the light signal into the electrical signal. It is the vice versa of transmitter section. Now we amplify the signal again, signal restore, and this is your output electrical signal. So you can see this is the block diagram of a optical fiber communication. Now the advantage, the physical advantage of the optical fiber cables are the capacity of these cables is much higher than copper wire cable. Okay, the bandwidth of these optical fiber communication is very high, so we can use this communication with number of channels. So the capacity is very high. Through the capacity is higher, the size of cable does not increase. Okay, the size of optical fiber is very low, और ये इसका जो साइज होता है वो इतना कम होता है, लेकिन उसमें हम बहुत सारे नंबर ऑफ चैनल्स को सेंड करा सकते हैं. कैपेसिटी हाई है लेकिन साइज लो है. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दीज केबल इज मच लेस. बहुत ही शॉर्ट एरिया में हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं. The weight is much lighter than the copper cables. Since these cables are dielectric, no spark hazard at present. Shock आपको नहीं लगेगा. These cables are more corrosion resistant than copper cable as they are bent easily and are flexible. The raw material for the manufacturers of optical fiber cable is glass, which is cheaper, and the copper, which cheaper the copper. Fiber optical cable last longer than copper cables. So these are the advantages. Okay. Now advantage, actually the installation cost is high. Actually optical fiber is very cheap or very low cost, but the installation cost is high. Okay. The number of repeaters we require to increase the distance in optical fiber communication. Now the application of optical fiber, these are the application. We can use in telephone system, we can use in submarine cables, CCTV, hospitals, school traffic management system, used connecting fire, police and other emergency systems. They have many industrial uses and also used for in heavy duty construction. Okay, due to its large bandwidth, we are using in most of application of optical fiber. बेसिकली आजकल हम लोग इंटरनेट डेटा यूज कर रहे हैं, उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कम यूज करते हैं क्योंकि हमें स्पीड उसमें फास्ट मिलती है. ओके, क्योंकि बैंडविड्थ जितना फास्ट होगी, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी फास्ट होगी, उतना ही उसका जो सिग्नलिंग रेट है वो भी आपका हाई होगा. ओके, तो ये आज का जो लेक्चर था उसमें आपने देखा कि व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर, व्हाट इज द block diagram or structure of optical fiber communication, what are the advantage, disadvantage. Okay, thank you very much.